Today's topic is capital structure. The objective of today's lecture is discuss the capital structure concepts, capital structure planning, concept of value of firm, significance of cost of capital, जिसको हम WACC भी कहते हैं, capital structure theories, net income and net operating income, NI theory, net income theory, NOI, net operating income theory. First of all, word structure. अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बिजनेस के अंदर structure of capital in financial management. If you recall the statement of financial position, in statement of financial positions, it's one side is assets, non-current assets and current assets. Assets are equal to as equity and liabilities. In equity, there are share capital and reserves. Non-current liabilities are the long-term liabilities which will be paid after 3 years, minimum more than 1 year, but sometime it's more than 5 years. आज के हमारे जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है कि जो इक्विटी या नॉन करंट लायबिलिटीज का जो स्ट्रक्चर है, कितनी लायबिलिटीज होनी चाहिए. जस्ट लाइक अगर कोई एनी एंटरप्रेन्योरशिप, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके पास सबसे पहले ये देखना है कि मुझे किससे पैसा लेना है. क्या अपनी इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल मेरा कितना है, और उसके पास अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए तो या तो वो किसी से क्रेडिट ले ले, मींस बैंक से लोन ले ले, लॉन्ग टर्म के लिए किसी से बेनिफिट क्रेडिट ले ले, या अपनी ओनरशिप आइदर टू बाय acquire get any non-current liabilities or share business ownership like a partnership. या तो कैपिटल के बिजनेस के शेयर्स को सेल करे या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में से किसी से क्रेडिट ले ले. दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द मिक्स ऑफ ओन कैपिटल, जिसको कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कहा जाता है, एंड borrowed capital, the debenture loan from banks and financial institutions, any debenture debts loans from financial institutions. Means capital structure is defined as a mixture of owner equity and capital. Borrowed capital means debenture or debts. Maximization of shareholders' wealth is a prime object of the financial managers. The same may be achieved if an optimal capital structure is designed for the company. If your capital structure is optimal, mean at what level you have to keep the share equity own money, or how much you have to get from debts from markets. This optimal level will maximize your shareholders' wealth. Planning a capital structure is a highly psychological, complex, and qualitative process. It involves balancing the shareholders' expectations, risk and return, and capital requirement of the firm. बिजनेस के अंदर कितना पैसा चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके रिस्क एंड रिटर्न, जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी. सेम डेटर्स और जस्ट फॉर डिबेंचर्स एंड डेट्स, just they are for interest, certain percent, either business is earning or either business is earning profit or not, we have to pay interest on debts and debentures. But the shareholders have all risk. If the company faces any losses, they will lose even their share capital. That's why shareholders' expectation is higher than the debentures. Planning the capital structure, importance consideration, कुछ basic definitions हैं written.
ability to generate maximize returns to the shareholders, maximize earning per share, maximize market price per share। क्या बिजनेस के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर सके? जिससे अब जैसे प्रॉफिट जनरेट होगा तो मार्केट के अंदर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो एक्चुअल ऑनर से उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, जो हम प्रीवियस चैप्टर रिस्क एंड रिवार्ड में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, weighted average cost of capital, debt is cheaper than equity। डेट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी से हमेशा चीपर होता है ड्यू टू टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट एंड नो बेनिफिट्स ऑन डिविडेंड। हमेशा डेट्स चीपर क्यों होती हैं? क्योंकि जब डेट्स के लिए हम जब इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बिफोर टैक्स हम वो अपना एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो टैक्स की शील्ड है, जो टैक्स का बेनिफिट है वो हमें मिलता है। जबकि उसके अंदर इक्विटी के अंदर आपको जो भी पे करना है ऑनर्स को वो आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट से सेल करना है, जिस वजह से इक्विटी पे डिविडेंड पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। रिस्क, इंसॉल्वेंसी रिस्क कनेक्टेड विथ हाई डेट कंपोनेंट्स। जितनी रिस्क होगी, हाई डेट्स जितने हैं, जिस कंपनी के अंदर अपनी ऑनरशिप कम है, जितनी डेट्स ज्यादा होंगे उतना ही आपके पास इंसॉल्वेंसी रिस्क ज्यादा होगा। कंट्रोल, अवॉइड डायल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल, हेंस द डेट्स प्रेफर्ड टू द न्यू इक्विटी शेयर। कंट्रोल, बिजनेस के कंट्रोल्स को इस तरीके से अवॉइड करें कि किसी भी की वजह से आपके डेट्स जो है, डिवेंचर से लॉन्ग टर्म लोन है, वो किसी न्यू इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो। अगर शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बिजनेस का मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटी, एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स, is the firm is able to pay, generate profits and pay interest and as well as principal on time. Value of the firm directly correlate with the maximization of shareholders wealth। बिजनेस की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स। अगर और शेयर होल्डर्स की वैल्यू, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो बिजनेस की वैल्यू भी मैक्सिमाइज होगी। Value of the firm depends upon earning of a firm and it is a cost of capital। बिजनेस की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है डायरेक्ट आपके एक तो अर्निंग पे, सेकंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कि आपने जो कैपिटल अक्वायर किया है, मींस कैपिटल का मकसद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस इक्विटी शेयर्स, जिसको हम वेक कहते हैं। जितने वेक पे इफेक्ट आएगा उतना ही आपके पास वैल्यू वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट आएगा। Earnings are a function of the investment decisions, operating efficiencies, and WACC is function of its capital structure। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी बिजनेस इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, दिस इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग। बट द WACC इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। WACC जो पूरा बेस कर रहा है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे। वैल्यू ऑफ द फर्म इज ड्राइव बाय कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजिंग द अर्निंग बाय इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय वेक। जैसे आप जितनी अर्निंग होगी इसको डिवाइड बाय वेक करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ द फर्म वेरीज ड्यू टू द चेंज इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी और इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर बोथ। अगर आपके पास अर्निंग में चेंजेस आती है या आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज आती है या दोनों में कोई चेंजेस आती है तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो जाएगी। इट मींस डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिपेंड ऑन द अर्निंग एंड वेक। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट अफेक्ट द टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म EBIT, but it can affect the residual shareholders earning। कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास किसी भी टोटल अर्निंग पे अफेक्ट नहीं करेगा, बट शेयर होल्डर्स की अर्निंग पे जरूर अफेक्ट कर सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज हैं, कुछ असम्पशंस हैं। फर्स्ट, द फर्म्स कैन यूज ओनली टू सोर्स ऑफ द फंड्स। दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, या तो इक्विटी या डेट्स। नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म, नो चेंज इन टोटल एसेट्स।
कोई एसेट्स में फर्दर चेंजेस नहीं करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, 100% डिविडेंड पे आउट, नो रिटेन अर्निंग, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो 100% आप डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, रिटेंशन नहीं कर रहे। बिजनेस रिस्क ऑफ अ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग मिक्स। बिजनेस रिस्क आपके फर्म का अफेक्ट नहीं हो रहा फाइनेंसिंग मिक्स की वजह से। बिजनेस का रिस्क जो है वो ही रहेगा। नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेशन, इसके अंदर फिलहाल हम इग्नोर करें कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल टैक्सेशन। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, हमेशा जो इन्वेस्टर है वो फ्यूचर में ह्यूज प्रॉफिट में ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, net income approach proposes that there is a definite relationship between the capital structure and the value of the firm, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट डिफाइंड रिलेशन करता है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म में डायरेक्ट आपका रिलेशन है। इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इन्फ्लुएंसेस इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर आपके इन्फ्लुएंस फर्म के इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि अब कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से अगर इन्फ्लुएंस है वेक पे, वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो आपके पास इस वेक की वजह से डायरेक्ट फर्म की वैल्यू अफेक्ट होगी। एनआई अप्रोच अजम्पशन, अब इस अप्रोच के अंदर कुछ अजम्पशंस हैं। एनआई अप्रोच अज्यूम दैट कंटीन्यूअस इंक्रीज इन द डेट्स डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। एनआई अप्रोच ये कहते हैं कि अगर जितने डेट्स इंक्रीज होंगे कोई इन्वेस्टर पे रिस्क नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ डेट्स, जिसको हम केडी कहते हैं, इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, ऑलवेज केडी इज लेस देन के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट्स कम होगी। और इसके अंदर भी कोई इनकम टैक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। As per NI approach, higher use of debts capital will result in reduction of the WACC. As a consequences, value of the firm will be increased. जैसे जैसे आपके पास डेट्स को अगर ज्यादा करेंगे तो आपके पास रिडक्शन होगी वैक में, वैक आपका कम होगा और उसके साथ साथ आपके फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। Therefore, value of the firm is equal to earning divided by WACC. EBIT being constant and WACC is reduced. अगर कांस्टेंट होगी, अर्निंग आपकी सेम होगी और WACC चेंज होगी तो आपके पास वैल्यू में भी, फर्म की वैल्यू भी चेंज होगी। वैल्यू ऑफ द फर्म विल ऑलवेज इंक्रीज, अगर WACC जितना WACC डिक्रीज होगा आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। As per NI approach, a firm will have maximum value at a point where WACC is minimum, when the firm is almost debt financed. जब ऑर्गेनाइजेशन जितनी फर्म डेट फाइनेंस होगी तो जितना जिस लेवल पे वेक मिनिमम होगा उस लेवल पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ग्राफिकल कॉस्ट आपके पास के डी, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आपके पास इक्वल है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपके पास, सॉरी, कॉस्ट डेट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपके पास वेक की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। एज पर प्रोपोर्शन ऑफ द डेट्स के डी इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द वेक कैन नॉट रिड्यूसेस। जैसे स्ट्रक्चर के डेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, जिस लेवल पे डेट्स इंक्रीज होते जाएंगे उस लेवल पे आपके पास के नॉट वेट वेक जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स। EBIT, earning before interest and taxes are 200,000. Cost of capital KE means cost of equity is 10%. Cost of debts KD is equal to 6%. Case 1, where debts are 500,000. Case 2, debts are 700,000. In case 3, debts are 200,000. Earlier we have discussed capital structure doesn't affect the EBIT. If the firm
In case 1 where the debts are 500,000, EBIT earning before interest and tax is 200,000. Debt interest 5% of the 500,000 debts, 6% on the 500,000 is 30,000. Now the EBT earning before taxation is equal to 170,000. Cost of equity is 10%, where the cost of equity EBT divided by KE, the value of the equity will be the 1.7 million. Equity की value 17 million, 1,700,000, 1.7 million, and debts are 500,000. The firm value is 2.2 million. Now WACC can be calculated as EBIT divided by value of the firm. EBIT is 200,000 divided by value of the firm 2.2 million. It's a 9.09. WACC will be the 9.09%. In case 2, where debts are 700,000, EBIT will remain same, but the debt interest will be the increase. 6% of the 700,000 is a 42,000. Now the EBT will be 158,000. Cost of capital, cost of debts is 10%. The value of equity will be 15,80,000. Cost value of debts are 700,000. Value of debts plus cost equity, value of equity will become the total value of the firm will be the 2.28 million, 22,80,000. Now the WACC will be changed. The EBIT divided by value of the firm, 200,000 divided by 280 will be the 8.77%. In case 3, where the debts are 200,000, EBIT is itself is 200,000. Now the debts will be, interest will be the 1,200,000. 200,000 multiplied by 6%. 200,000 minus 12,000, it will be EBT earning before tax will be 1,88,000. 10% cost of equity, value of the firm will be 18.8 lakh or 1.88 million. Value of debts are 200,000. The value of the firm will become 20,80,000. Now the WACC 200,000 divided by 20,80,000. Now the WACC will be the 9.62%. Now we have to see where at what level the WACC is the minimized. It's a 8.77%. But the value of the firm where in net income approach, it's a what we have assumed it where the WACC will be the decrease, the firm value will be the highest or the wealth maximization 2.28 million and the WACC is 8.7. If WACC increase from 8.77 to 9.09, value of the firm will be the decrease. Further, if we increase from 9.09 WACC to the 9.62, the value of the firm will decrease 2.2 million to 2.08 million. This is all about NI approach. Second theory is NOI approach, net operating income approach. Net operating approach is exact opposite to the net income approach. ये बिल्कुल NI के against opposite है. As per NOI approach, value of the firm is not depend upon the capital. Value of the firm capital पे depend नहीं कर रहा. Assumption, WACC is always constant and it depends on the business risk. WACC हमेशा कांस्टेंट रहता है. वहां पे हम क्या कर रहे थे कि WACC आपकी हमेशा चेंज हो रहा है. बिजनेस रिस्क आपका डिपेंडेंट, बिजनेस रिस्क आपके डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंडेंट है. और यहाँ पे आपका बिजनेस रिस्क पे आपके पास हमेशा WACC डिपेंडेंट है. वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
Value of the firm is calculated using overall cost of capital, WACC only. Cost of debts is constant. No tax exists. Use of the higher debts component borrowing in the capital structure increase the risk of shareholders. जितने आपके पास डेट्स इंक्रीज होंगे उतने ही आपके पास शेयर होल्डर्स की रिस्क इंक्रीज होगी. Increase in the shareholders risk cause the equity capitalization rate to increase. Higher cost of equity. अगर आपके पास शेयर होल्डर की रिस्क इंक्रीज होगी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट टू इंक्रीज. कैपिटलाइजेशन रेट भी आपके पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपका इंक्रीज होगा. A higher cost of equity nullifies the advantage gained due to cheaper cost of debts. In other words, the finance mix is irrelevant and doesn't affect the value of the firm. अगर आपके पास डेट्स की वजह से हायर, आपने लोअर कॉस्ट में अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है, तो आपके पास जितना आपने डेट्स को इंक्रीज किया उतने ही आपके पास रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हुआ और शेयर कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, जो नलीफाई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट से. In this diagram, cost of capital K naught is constant. As the proportion of debts increases, KE increases. जितने जितना आपने कॉस्ट ऑफ डेट्स, जितनी अपने डेट्स का पोर्शन इंक्रीज करेंगे उतना ही आपके पास KE आपका इंक्रीज होगा. नो इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सिमिलर क्वेश्चन. Calculate the value of the firm in weighted average cost of capital for the following capital structures where EBIT is 200,000. WACC. In earlier question, we have cost of capital, but here is constant is WACC. And cost of debts is 6%. Capital debt capital 300,000, 400,000, and 500,000. If EBIT earning before interest and taxes is 200,000, WACC is 10%. Value of the firm EBIT divided by WACC is 2 million. Value of debts 300,000. So here the value of the equity is 1.7 million. Interest rate 18,000. It means earning before tax EBT means EBIT is 200,000 minus 6% interest on 300,000, 18,000 minus the EBT earning before taxes 1,82,000. Now the cost of equity. Cost of equity हमने previous भी calculate किया था. Cost of equity will be the EBT divided by cost value of equity. Value of equity आपके पास 1.7 million and EBT is 10.71 million. Sorry, EBT is 1,82,000. 1,82,000 divided by 1.7 million. It will be the cost of equity will be the 10.71%. Second case where the debts are 400,000. EBIT 200,000. WACC 10%. EBIT divided by WACC will be the firm of value 2 million. Same value of the firm. Debts is 400,000. Now equity will decrease 1.6 million. Interest rate is at 6%. 6% of 400,000 will be the 24,000. Now the EBT will be the 176,000. EBT divided by the value of equity 170,000. 6 divided by 1.6 million will be the 17. Cost of equity will be the 11%. Where the case 3 debts are 500,000. Value of the firm will be 2 million. Same value of debts 500 less minus less debts of value of debts 500,000 equal value will be equal to, value of the equity will be the 1.5 million. Interest rate now 6% into the 5%, 500,000, 30,000. Now the EBT earning before tax will be the 170 million, 170,000. EBT divided by 1.5 million means 170,000 divided by
1.5 million will be the cost of equity will be the 11.33. Now this shows once case in case one debts are 300,000, its cost of equity is 10.71%. Once debts will increase from 300,000 to 400,000, cost of equity KE will be increased from 10.71 to 11%. If we increase debts 400 to 500, the cost of equity will be increased 11 to 11.33%. This is all about NI theory and NOI theory. Thank you. Allah Hafiz.